प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल। आज तारीख है 9 अगस्त। एक छोटा सा वीडियो बनाने का मन कर रहा है। वैसे आज काफ़ी समय बीत चुका है। 1996, 97, 98 में मैं फ्रांस में काम करता था। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस फेलोशिप एंड वो फेलोशिप भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। और फ्रांस में उसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंजियोप्लास्टी वाज डेवलपिंग एंड इट वाज नॉट सो कॉमन एट दैट टाइम। और मुझे एक स्पेशल फेलोशिप मिली। आई वाज पेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड आई वाज इनिशियली फॉर 1 year एंड देन एक्सटेंडेड फर्दर फॉर फ्यू मंथ्स। 1996 सितंबर आई जॉइंड द प्लेस। तो उसका कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं शो करना चाहता हूँ और कुछ एक सर्टिफिकेट है डॉक्टर एलन क्रीबियर का जो उन्होंने एट द एंड ऑफ माई स्टे दिया मुझे। तो वो फोटोग्राफ और वो शो करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक फोटोग्राफ है जो मैं डॉक्टर क्रीबियर के साथ आई एम यंग, ऑफकोर्स आई एम स्टिल यंग। डॉक्टर क्रीबियर काफ़ी यंग दिख रहे हैं। और एक पेशेंट है, फ्रेंच पेशेंट। ये कैथ लैब है, कार्डियक कैथ लैब है जो वहाँ की है। इट इज़ द कार्डियक कैथराइजेशन लैब ऑफ फ्रेंच हॉस्पिटल चार्ल्स निकोल रुआ। वहीं पे हम लोग ये देख रहे हैं और यू कैन सी द पेशेंट एंजियोग्राफी। एंड उसके अलावा एक और फोटोग्राफ है जहाँ पे आई एम स्क्रब विद डॉक्टर एलन क्रीबियर, लुकिंग हैंडसम, both of us. And these are the nurses here and you can see the cath lab. So one certificate which I really relish is this one and I want to show you this certificate. कि ये certificate जब during my end of my stay तो Dr. Keber said I am preparing your certificate and I was not so much interested कि हमने certificate तो मिल जाएगा, काम सीख ही लिया है। लेकिन जब उन्होंने सर्टिफिकेट मुझे दिया एंड आई रेड इन फ्रंट ऑफ हिम तो आई वॉज सो इमोशनली, मुझे बहुत खुशी भी हुई और आई बिकेम वेरी इमोशनल। वाई आई बिकेम वेरी इमोशनल बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेट जो उन्होंने खुद टाइप किया था। ही यूज्ड टू टाइप हिमसेल्फ एंड ही वॉज वन ऑफ द मास्टर्स इन दैट वे दैट ही नेवर ही वॉज सेंडिंग इट टू सेक्रेटरीज कि आप टाइप करो। वैसे भी वहाँ के जो सेक्रेटरीज थी दे वर नॉट सो गुड इनफ इन इंग्लिश and it was a French hospital. So अब मैं सर्टिफिकेट पढ़ता हूँ बट सबसे पहले मैं आखिरी वाला पढ़ूंगा जो सबसे आखिर में लिखा उन्होंने। दिस इज सर्टिफिकेट साइन बाय डॉक्टर एलन क्रीबियर एंड आई वर्क इट एक्चुअली टिल 2000 जनवरी 2 1998 तक का ये है। तो 98 के अर्ली पार्ट में उन्होंने दिया। यू कैन सी द सर्टिफिकेट सेंटर हॉस्पिटलियर यूनिवर्सिटी द रियो, हॉस्पिटल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रुआ। डी मीन्स ऑफ रुआ। Rouen is a city which is in Paris, which is about 330 kilometers from Paris. And Professor Alan Cribbier, head of department, president of the French Society of Interventional Cardiology, he was a very big figure at that time. He became famous already in 1986 जब इन्होंने aortic valvuloplasty किया तो he became very famous all over the world. Aortic valve को जो balloon से खोला था तो he became already very famous. एंड उसके बाद इन्होंने माइटल कोमोस्ट्रोम बनाया और अभी इनका इनोवेशन जारी था। जो फादर ऑफ ट्रांसकैथेटर वेल्व इम्प्लांटेशन एओर्टिक इन्होंने पहली बार किया 2002 में। लेकिन 96, 97, 98 में एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन करते थे। तो टुडे माय फोकस इज टू रियली टेल यू द सर्टिफिकेट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर मी हिमसेल्फ विदाउट माई इंटरवेंशन एट ऑल। दिस इज टू सर्टिफाई द डॉक्टर विवेक गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ Medical Sciences, Lucknow, India has been. Before coming to France, I was working at SGPGI, Lucknow, as a clinical fellow from 96 to 1998. 96 to 98. अब इन्होंने डिटेल्स लिखा है, so many details which I was not expecting. Since he joined, Dr. Gupta worked full time in the cardiac catheterization laboratory. The main goal of his stay being to be trained in percutaneous coronary and ventricular intervention. Over this long period of training. Dr. Gupta has been directly involved in about 60% of all the interventional performed in the laboratory, cardiac cath lab. The activity in interventional cardiology in our center in 97 was 3,000 coronary angiography and about 1,000 angioplasties, 56 balloon aortic valvuloplasty,
28 mitral valvuloplasty. Dr. Gupta has performed about 200,000 coronary angioplasties as a first investigator. So he has written a very detailed, beside his activity in cardiac international laboratory, he has been actively involved in all the discussion concerning the indication of various procedures and selection of hardware. In this regard, he regularly participated in each weekly internal meetings of the medical and surgical staff, and he was also closely implicated in our pioneering experiences in primary stenting left vein का शुरू हो गया था, in stenting in small coronary arteries. In his first experience with an original low perfusion balloon catheter and development of new technique of mitral cholecystomy using a metallic dilator. During this long stay, he also attended several conferences, 2 seminars. October 96, 50 most complex cases was performed live over a period of. He enriched his training. He also several international meetings on interventional cardiology. They usually enriched meeting such 2 seminars organized in the department in October 96 and 97, during which 50 most complex cases were performed live over 50 complex cases live over 10 days. So these are the complex angioplasties. Rotterdam I attended, Madrid I attended conference, in Corcos meetings, and French Society of Cardiology meeting in Deauville in June 97, where I went with him, and 4 additional meetings in 97. So this was all description by Dr. Crevier regarding my conferences. He also showed a strong interest in clinical research by cooperating with us in several research trials. I was involved in research trials, and his name appears as co-author in many national and international publications and communications. He also writing himself 5 articles reporting the results of coronary intervention, in particularly instructive cases that have been accepted or will be accepted in Indian Heart Journal and Cardiac Diagnosis. The most important part of the certificate is this one. Dr. Gupta appeared not only to be an excellent and dedicated physician, but also the most sociable and nice person. Dr. Crevier, a main doctor who was one of the stalwarts of one of the very important doctor giving a certificate and writing, Dr. Gupta appeared not only to be an excellent and dedicated physician, but also the most sociable and nice person. He was always ready to help. So this is what he's writing about me when I'm leaving the hospital in 1998. He was always ready to help, extremely cooperative, smiling, able to develop the best relationship with everyone in the department, able to develop the best relationship, koi ladai jhagda nahi, with everyone in the department. I personally, this is very important, Dr. Crevier is writing, Alan Crevier, I personally developed with him a most enjoyable, close relationship. I developed with him. This is what he's writing. I personally developed with him a most enjoyable, close relationship, and there is no doubt that Dr.